Okay, dear. So we'll have a discussion today on the carpal tunnel syndrome. Okay, what is basically carpal tunnel syndrome? It is the entrapment of the median nerve at the wrist caused by reduced size or space of the carpal tunnel. Right? अब tunnel का तो आपको पता ही होगा. What is actually tunnel? Tunnel is the narrow space. या तो फिर we call it also सुरंग. Fine. Okay. Right? Acha. So leading to paresthesia, pain, and occasionally paralysis can be precipitated by overuse of wrist flexor associated with the pregnancy, diabetes, mellitus, hypothyroidism, acromegaly, right? Rheumatoid arthritis and amyloidosis. So we will discuss all these conditions, okay, in detail. First of all, you need to understand one thing, okay, कि carpal tunnel syndrome actually में होता क्या है, right? For example, this is a diagram of a person, right? And this is the hand, okay, this is the hand. Up you can see actually these area, okay, these area is called as the wrist. Fine, this is called as the wrist. Okay, fine. Now from the wrist there is actually a nerve which is called as the median nerve. Okay, that extends downward. इस तरह से वो downward आता है. Okay, and that will supply your thumb. Understood? That will supply your index finger, this one. Okay, that will supply your middle finger, this one. Okay, right? And that will also supply your this ring finger. Okay, only this part of the ring finger. Okay, and this part, not this part. Okay, only this part of the ring finger is supplied by the median nerve. Okay, fine. और in short आप ये भी कह सकते हो कि these actually makes an M, right? For example, ये एक M बना रहा है, right? ये है इस तरह से, right? फिर उसके बाद ये अंदर की तरफ जाता है, फिर ये बाहर की तरफ आता है इस तरह. Okay, and this will go like this. So in short, this is making an M, right? M stands for the median nerve. Median nerve supplies our for example thumb, okay, index finger and the middle finger, and also this thumb part of the ring finger. Okay, fine. Acha. So now you have to understand one thing, okay. If there is some kind of problem in the this one, okay, in the median nerve, let me write down for you, this is actually the median nerve, right? If there is some kind of problem with the median nerve, or for example there is some kind of compression of the median nerve, right? So what happens, we will see actually some for example we will have pain, okay, pain, and we will have paresthesia. What is paresthesia? Paresthesia is basically, you know, the feeling of numbness or tingling, pins and needles, okay, such type of feelings, okay, they're called as the paresthesia. Understood? So we'll have pain, we will have paresthesia. So now we will actually try to understand these in detail, okay, actually what happens here, right? For example, this is your wrist. I will cut this wrist, okay, ये इस wrist को मैं यहाँ से काट के मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि what actually happens inside the wrist. Okay, fine. तो ये है रिस्ट, इसको मैंने यहाँ से काटा. अब हम ऊपर से देखेंगे कि इस रिस्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं. ओके, फाइन, राइट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, that is actually inside the wrist, okay, you have some of the very important structures, okay, like you have your bones. Do you know about the bones, about the carpal bones, right? Okay, she looks too pretty, try to catch her in the first year you studied, I think. Right? So there are actually carpal bones like these. Okay, fine. Different types of carpal bones, proximal, distal carpal bones are there, right? Okay, by the way, there is one more ligament. Okay, let me tell you, there is one more ligament that is actually called as the transverse carpal ligament, right? This is actually your transverse carpal ligament. Understood? Okay, should I write it? This is actually the transverse, okay, transverse carpal ligament. Understood? Transverse carpal ligament, right? Okay, by the way, ये है आपके पास कौन सा वाला है? This is actually the palm of your hand, okay, right? This is palm of your hand, and this is the here you have your thumb. Okay, fine. This is the palm of your hand, यानी कि ये वाला area, and this is the thumb. Okay, this is your thumb at these side. Okay, this is your thumb. Understood? Okay, and what are these? Basically they are actually your carpal bones. Okay, I will write down for you so that you don't forget. They are actually your carpal bones. Okay, different carpal bones. Understood? Now listen very carefully. Wait. Can you see here is a space, here is a tunnel, right? Here is a tunnel. Now this tunnel is actually called as the carpal tunnel. Okay, this tunnel is called as the carpal tunnel. Okay,
दिस टनल इज कॉल्ड एज कार्पल टनल। अंडरस्टूड नाउ, फाइन। अब इस टनल के अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? ये टनल किस चीज़ से बना है? इसका रूफ किस चीज़ से बना है? ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट से। इसका जो बेस है वो किस चीज़ से बना है? कार्पल बोन्स से। अंडरस्टूड, ओके। अब ये जो टनल है इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? लिसन वेरी केयरफुली, ओके। इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? देयर आर, फॉर एग्जांपल, दी tendons. First of all, okay, you need to understand the tendons. Which tendons are there? The flexor tendons, okay. Tendons are, for example, arranged like these, okay. Here are your tendons. 9 tendons are here, okay. Flexor tendons, we call them flexor tendons, right? So they are actually the flexor tendons. Understood, okay. There are flexor tendons, okay. So यहाँ पे क्या है? There are actually flexor tendons. नाउ यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नर्व होता है, ओके। दैट नर्व इज कॉल्ड इज द मीडियन नर्व, राइट, ओके। मीडियन नर्व, understood now. So what do we have here? We have median nerve. Understood now? Okay, fine. Listen very carefully now, okay. What happens normally? This is actually the carpal tunnel, which is made of the transverse carpal ligament and the carpal bones. Fine, okay. What is actually inside the carpal bones? We will see. Sorry, carpal tunnel के अंदर क्या क्या है? इस सुरंग के अंदर क्या है? नॉर्मली सुरंग के अंदर क्या होता है? ट्रेन आता जाता है ना, या तो फिर कोई रास्ता होता है। तो इसी तरह कार्पल टनल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। The very first thing that you have to remember there is actually flexor tendons, okay, and the next thing is median nerve, right, okay. Flexor tendons and median nerve, right, okay. Now listen very carefully. Due to some reason, okay, due to, there are actually multiple reasons behind it. क्या होता है कि ये जो आपके पास है टेंडन्स, राइट, इन टेंडन्स का क्या होता है? इन टेंडन्स का, ये फ्लेक्सर टेंडन्स का इन्फ्लेमेशन होता है, ओके, फाइन। देयर इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन्स, ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ tendons, fine. And there can be multiple factors behind it. Whenever there is some kind of inflammation, you, this is something very obvious कि यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स होंगे वो ब्लड वेसल्स, उनकी वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। एंडोथीलियल गैप्स इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जितना फ्लूइड होगा वो आहिस्ता आहिस्ता से इस स्पेस के अंदर, इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर यहाँ पे लीक कर जाएगा, ओके। यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होते हैं ब्लड वेसल्स, और जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट विल स्टार्ट लीकिंग इनटू दिस स्पेस। अंडरस्टूड नाउ, ओके। तो जैसे ही फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड, दिस फ्लूइड विल स्टार्ट अप्लाइंग प्रेशर ऑन दिस मीडियन नर्व, ओके। ये फ्लूइड इस मीडियन नर्व को क्या करता है? कंप्रेस करता है चारों तरफ से, ओके। तो जैसे ही मीडियन नर्व कंप्रेस होता है तो क्या मिलता है हमें? मीडियन नर्व कंप्रेशन, okay, right, median nerve compression, and that is actually called as the carpal tunnel syndrome, fine। जब आपका median nerve compress so due to many reasons, okay, especially due to inflammation, so that will lead to the carpal tunnel syndrome. Understood, okay. When we talk about the causes of this, there can be multiple factors behind it, okay. There can be many triggers. For example, the very first one is, you know, pregnancy. आपको पता है pregnancy के अंदर क्या होता है? Listen very carefully, okay, it was also written in your book, pregnancy। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में जो हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में फ्लूइड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है, ओके, राइट। फ्लूइड रिटेंशन कॉज करता है। ये फ्लूइड रिटेंशन का मतलब कि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लूइड को एक्यूमुलेट करके रखता है, जमा करके रखता है, ओके, राइट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब वही फ्लूइड अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, तो यहाँ पे जब एक्यूमुलेट होता है फ्लूइड, तो वो फ्लूइड क्या करता है? मीडियन नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। अंडरस्टूड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्चुअली द डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? यू माइट हैव सीन पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटस, राइट, ओके। इसमें क्या होता है? नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होता है, राइट। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ इतना समझे कि शुगर क्या करता है? शुगर विल स्टिक, ओके, शुगर विल स्टिक विथ प्रोटीन्स और कोलेजेंस, या तो फिर शुगर विल स्टिक विद दीज टेंडन्स, ओके। ये जो टेंडन्स आपको नजर आ रहा है, शुगर विल स्टिक विद दीज टेंडन्स, ओके, फाइन। जैसे ही शुगर इस टेंडन, इन टेंडन्स के साथ स्टिक करता है, चिपक जाता है, उसके बाद क्या होता है? ये जो टेंडन्स होते हैं उनकी वो साइज में इंक्रीज करते हैं, वो थिक हो जाते हैं। थिक होने की वजह से ये जो टेंडन्स है ये क्या करते हैं? बाद में प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं मीडियन नर्व को, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ओके,
right? So diabetes mellitus can be there. That there also can be, for example, hypothyroidism. Okay, hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकन्स का आपको पता होगा शायद, राइट? वो क्या होते हैं, ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकन्स डिपॉजिट होते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, राइट? आपको हमारे ऑर्बिटल फिशर में, या तो फिर फॉर एग्जांपल समटाइम्स दे में डिपॉजिट इनटू दिस कार्पल टनल, राइट? अब यहाँ पे अगर ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकन्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए, तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकन्स, ये H2O को अपनी तरफ खींचते, अट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी GAG की वजह से, राइट? एंड दैट विल कंप्रेस द मीडियन एंड दैट विल लीड टू कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, राइट? तो ये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और कंडीशन है एमाइलोइडोसिस का। एमाइलोइडोसिस, राइट? एमाइलोइडोसिस का तो आपको पता ही होगा, इसमें बीटा प्लेटेड अरेंजमेंट में प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ओके, जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी से वो निकल नहीं पाते। फाइन, ओके, हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते एक्चुअली में इस बीटा प्लेटेड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, राइट? ओके, सो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेट होते हैं, हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्पल टनल में, ओके, एंड दैट विल कंप्रेस द मीडियन नर्व एक्चुअली, राइट? Okay, so amyloidosis are actually abnormal proteins, right? Next one is the acromegaly. अब acromegaly क्या है? acromegaly हमारे पास है, do you know that wrestler ग्रेट खाली, right? ग्रेट खाली, ग्रेट खाली क्या है, ये एक इंडियन रेसलर था, फाइन, था क्या, अभी भी है ये ग्रेट खाली। तो इसमें इसको क्या था, इसको एक्रोमेगैली था, राइट? इट बेसिकली मीन्स इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है ना? अब उसकी वजह से क्या है कि इसके जो ऑर्गन्स थे वो मोर देन नॉर्मल साइज़ वो बड़े हो चुके थे, फाइन। तो किस वजह से हुआ था, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन जब हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट विल लीड टू एक्रोमेगैली, फाइन, जैसे कि ग्रेट खाली। तो इसी तरह से इनके फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर जो टेंडन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ये टेंडन्स भी साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं, ओके? और इतना इंक्रीज़ करते हैं समटाइम्स कि ये मीडियन नर्व को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने की वजह से फिर हमें क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। अंडरस्टूड? ओके। तो एक्चुअली यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि मीडियन नर्व हमारे जो हैंड को है, ये हमें हमारे हैंड को मोटर सप्लाई भी देता है, एंड मोस्टली ये सेंसरी सप्लाई देता है, ओके, फाइन। तो जैसे ये मीडियन नर्व डैमेज होता है, सो विल हैव सेंसेशंस ऑफ पेन, पैरेस्थीसिया एटसेट्रा, ओके, राइट? सो दिस, so far we have discussed, yeah, okay, the rest of the things I will teach you in the